Bismillahirrahmanirrahim. Dear MIS students, this is our first lecture of Ramadan. So, Ramadan Mubarak to everyone. I was just looking at I was recording this lecture and I was looking at the WhatsApp, and there were quite a few students who were very active on the WhatsApp at the time of Suhoor. So, my advice is that this time of Sahri is very valuable. Is focus on your food, and then make this time valuable by making dua at this time rather than chatting on WhatsApp. So may Allah make this Ramadan very valuable for all of us. So let's start this lecture. Okay, in Ramadan the timings of the class are changed, so you might have got the uh, revised schedule for the Ramadan. वो आप देख लें, उसमें timings थोड़े से change हुए हैं रमज़ान के अंदर, और uh, then the duration of the class is also a little bit reduced. So here in this today's lecture, we'll be discussing some contemporary software trends. So this is part 5 of the series of the lectures related to the chapter 5. So still we are covering, we're trying to complete this chapter 5. It's a little bit lengthy chapter. So in previous two lectures, we covered the contemporary hardware trends, and now most probably this week, this today's lecture and the next lecture will be about these contemporary software trends. ठीक है जी, तो आज के lecture के अंदर we'll try to cover these two software trends. One is Linux and open source software, and the second is Java and HTML and HTML5. So these two contemporary software trends will be covered in today's lecture. Let's start with open source software. Open source software is software produced by a community of several 100,000 programmers around the world. According to the leading open source professional association, opensource.org, open source software is free and can be modified by users. अच्छा जी, कॉन्सेप्ट इसका ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि किसी भी प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और फिर उसने इसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया, और इसका कोड जो था वो उसने अवेलेबल कर दिया टू अदर प्रोग्रामर्स एज वेल. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन सोर्स. किसका सोर्स कोड जो है सॉफ्टवेयर का वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, और उसके अंदर वो कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकता है, उसको मजीद वो बेहतर बना सकता है. So this is how this open source, that is the philosophy behind this open source software. के बजाय इसके कि एक्सक्यूज मी, एक लिमिटेड टीम जो है 2 4 5 प्रोग्रामर्स की वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करे, let the software be developed by hundreds and thousands of programmers around the world. तो जाहिर है जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा दिमाग एक चीज़ पे काम करेंगे, वो चीज़ उतनी बेहतर बनकर सामने आएगी. So this is the introduction of this open source software. So this works derived from the original code. The code must also be free, and the software can be redistributed by the user without additional licensing. ठीक है, तो चूंकि ओपन सोर्स है तो इसके अंदर जो है वो लाइसेंसिंग का इशू नहीं है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके वो इसको अपलोड कर सकता है, और वो जो इसमें मॉडिफिकेशंस करेगा, चेंजेस करेगा कोई भी प्रोग्रामर, दैट कोड अगेन विल बी अवेलेबल. ठीक है, तो लाइक it will keep on adding, and it will keep on refining. So in this way, open source software is by definition not restricted to any specific operating system or hardware technology, although most open source software is currently based on a Linux or Unix operating system. तो एक इसके अंदर जो फीचर रखा गया, कोशिश की गई कि जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को किसी सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट ना बनाया जाए. It should be independent of any operating system. It should be able to run on any operating system. Naturally जो प्रोग्रामर्स थी उनकी इंक्लिनेशन, चूंकि ओपन सोर्स है तो फिर उन्होंने इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी ओपन सोर्स देखा, जो कि लिनक्स और यूनिक्स दोनों ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अगेन दे आर आल्सो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो इसलिए ज़्यादा इंक्लिनेशन जो है most of the programmers, open source programmers, they prefer to develop software in Linux or Unix operating system.
The open source movement has been evolving for more than 30 years and has demonstrated that it can produce commercially acceptable high quality software. ठीक है जी, तो it's the history of this is or this the evolution of this open source software can be traced back to 30 years. So, since 30 years, the work has been this concept of open source became popular और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है कमर्शियल एप्लीकेशंस भी डेवलप हो गई और उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होना शुरू हो गई. Popular open source software tools include the Linux operating system, the Apache HTTP web server, the Mozilla Firefox web browser, and the Apache Open Office Desktop Productivity Suite. ठीक है, तो ये इसमें ओपन सोर्स जो पॉपुलर हैं सॉफ्टवेयर उनमें ये सारे आपको एग्जांपल्स मिलती है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाती है, वेब सर्वर के अंदर आपके पास अपाची है, वेब ब्राउजर के अंदर मोजिला फायरफॉक्स इज एन एग्जांपल और डेस्कटॉप के अंदर जो है हमें अपाची ओपन ऑफिस जो है दैट वी फाइंड दिस एज एन ओपन सोर्स. Open source tools are being used on netbooks as inexpensive alternatives to Microsoft Office. ठीक है, तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है. यू गेट it from the Microsoft, but if you use this open source desktop or Office, then that is a free of cost. You can download it. Major hardware and software vendors, including IBM, HP, Dell, Oracle, and SAP, now offer Linux-compatible versions of their products. ठीक है, तो जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं लीडिंग, उन्होंने भी they are also now relying on Linux, which is an open source operating software. सॉफ्टवेयर तो वो जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो कंपैटिबल है, यानी लिनक्स के ऊपर भी वो रन कर सकते हैं. Here is a few examples of closed source versus open source. Closed source, we all know Microsoft Office is a closed source software. McAfee जो कि एंटीवायरस है, इस तरह से एंटीवायरस के अंदर हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल्स हैं. फिर हमारे पास जो है विंडोज़ है, एप्पल सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज विंडोज़ फोन, ऑल ऑफ दीज आर क्लोज सोर्स. जबकि ओपन सोर्स के अंदर हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया, लिनक्स इज पॉपुलर, एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फिर हमारे पास गूगल सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल क्रोम है, देन वी हैव मोजिला फायरफॉक्स. ठीक है, दैट इज एन ऑपरेट, एंड देन वी हैव दिस you know all of these are the these are the few examples which you can see open source versus closed source. Closed source जो है proprietary है, किसी कंपनी ने उनको डेवलप किया है और आप उस कंपनी से परचेज करने पड़ते हैं. जबकि ओपन सोर्स जो है वो दे आर डेवलप्ड बाय different programmers and the source code is available on the net and most of the time you can download them free of cost. इसमें भी कुछ हमारे पास ऑप्शंस आना शुरू हो गए, जैसे रेड हैट है. रेड हैट के अंदर, लिनक्स के अंदर रेड हैट की एक ऑप्शन आ गई कि वो आपको यानी ओपन सोर्स है लेकिन कंपनी उसको लॉन्च करी, तो फिर उसमें दैट इज अन ओपन सोर्स बट इफ इट इज सपोर्टेड बाय द कंपनी, तो उसका फायदा ये कि उसमें अपग्रेडेशन का जो इशू है उसके अंदर अगर कोई वायरसेस आ जाते हैं तो वो सारे फिर वो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एड्रेस ऑल दोज इश्यूज. So that was all about the open source software. Now we discuss about Linux, which is one of the open source operating system. Linux was created by the Finnish programmer Linus Torvalds and first posted on the internet in August 1991. So you can say almost 30 years back, this Linux was developed by a Finnish programmer Linus Torvalds और उसने जो है ये इंटरनेट पे इसका कोड अवेलेबल कर दिया. Linux applications are embedded in cell phones, स्मार्टफोन्स, नेटबुक्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन सारी हमारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, मोबाइल फोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर, नेटबुक्स के अंदर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. Linux is available in free versions downloadable from the internet or in low cost commercial versions that include tools
and support from vendors such as Red Hat. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लिनक्स जो है वो आपको ओपन सोर्स भी मिल जाता है, और अगर आप किसी वेंडर जैसे रेड हैट इज वन ऑफ द वेंडर, ठीक है, अगर आप उससे लेना चाहें तो यू हैव टू पे, बट obviously then the whole responsibility of deployment, upgrading, then testing and all, uh, you know, whatever bugs are there, removing of the bugs, it is all responsibility of that company. Although Linux is not used in many desktop systems, it is a major force in local area networks, वेब सर्वर्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वर्क। ठीक है, तो डेस्कटॉप के अंदर तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विंटेल छाया हुआ है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विद द इंटेल प्रोसेसर, 90% ऑफ द मार्केट इज कैप्चर्ड बाय देम। लेकिन अगर हम लैन की बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स की बात करते हैं, वेब सर्वर्स की बात करते हैं, या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वर्क जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो लिनक्स इज predominant force there. IBM, HP, Intel, Dell, and Oracle have made Linux a central part of their offerings to corporations. ठीक है, जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं उनको जो भी ये प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, ऑल दीज बिग जॉइंट्स, IBM, HP, Intel, Dell, Oracle, तो ये सारे उसमें लिनक्स को यूज कर रहे हैं। The rise of open source software, particularly Linux and the applications it support, has profound implications for corporate software program platforms. Cost reduction, reliability, and resilience, and integration, because Linux works on all the major hardware platforms from mainframes to servers to clients. तो हमें यानी जो इसके पीछे, इसकी सक्सेस के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि जी इट इज लो कॉस्ट एज कंपेयर टू एनी ब्रांडेड सॉफ्टवेयर, since it is developed by hundreds and thousands of programmers, so we can see them as a reliable and resilient softwares. और चूंकि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल है, तो इंटीग्रेशन करना आसान है, इनको यूज करना आसान है, किसी भी सिस्टम के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दीज आर द मेजर फैक्टर्स ड्यू टू विच दिस लिनक्स इज बिकमिंग एवर पॉपुलर इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। Okay, Ji. So that was part one of today's lecture, which covered open source software and Linux. Part two of this lecture will cover the software for the web, in which we'll cover Java, HTML, and HTML5. Starting with the Java. Java is an operating system independent, processor independent, object oriented programming language that has become the leading interactive environment for the web. अच्छा जी, बेसिकली जावा के इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ यूज्ड इन वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, इंटरनेट के अंदर जो जितने भी हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, इंटरनेट की एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसकी जो पॉपुलैरिटी है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसके पीछे व्हाट आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड दैट पॉपुलैरिटी। नंबर वन, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। ठीक है, जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जा सकता है, तो आप चाहे कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहे हैं, लिनक्स रन कर रहे हैं, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, तो जावा वहाँ पे इट विल वर्क फाइन विद एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी इसकी खूबी ये है कि इट इज प्रोसेसर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप कोई भी प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, वेदर यू आर यूजिंग इंटेल, वेदर यू आर यूजिंग AMD, सेलेरॉन, कोई भी आप उसमें यूज कर रहे हैं, तो जावा विल वर्क विद एनी processor. And third feature of Java is it is object oriented programming language. So in programming languages, object oriented programming languages are very considered very stable, and they are considered uh, very uh, easy टू एक्सटेंड। ठीक है, उसमें एक्सटेंशन बड़ी इजी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स आप डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर आप मजीद जितने भी उसमें ऑब्जेक्ट्स ऐड करना चाहें, दैट बिकम्स इजी। तो इस वजह से ये तीन मेन चीजें हैं जिसकी वजह से जावा हैज कैप्चर्ड
huge market and made its place among the programmers. Now, Java was created by James Gosling and the Green team at Sun Microsystems in 1992. ठीक है तो 1991 में हमने देखा कि लिनक्स जो है वो मंजरेआम पे आया 1992 के अंदर जावा became it came to surface और डेवलप किया गया सन माइक्रोसिस्टम इज अ वेरी फेमस कंपनी और उसके अंदर जेम्स गॉसलिंग वाज द मेन पर्सन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जावा in November 13, 2006, Sun released much of Java as open source software under the terms of the GNU General Public License, completing the process on May 8, 2007. ठीक है तो 2007 में this Java became open source. इसका ये source code was available. The Java platform has migrated into cell phones, smartphones, automobiles, music players, games machines, and finally into set-top cable television systems serving interactive content and pay-per-view services. तो इसकी एप्लीकेशंस हमें कहाँ पे जावा कहाँ यूज हो रहा है सो इट इज प्रीटी मच यूज्ड एवरीवेयर आपके मोबाइल फोन्स के अंदर गाड़ियों के अंदर जो है आप देखें जितने भी उसके अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं वो जावा के ऊपर रन कर रहे हैं म्यूजिक प्लेयर्स के अंदर ये यूज हो रहा है बहुत सारे आपके माशाल्लाह गेमर्स हैं तो दे माइट हैव नोटिस कि जी उनकी जो गेम्स डेवलप हो रही हैं दे आर ऑल डेवलप्ड ऑन जावा और इस तरह से जो आप केबल टेलीविजन यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी जावा जो है वो यूज हो रहा है Java software is designed to run on any computer or computing device, regardless of the specific microprocessor or operating system the device uses. ठीक है तो वो हमने पहले भी बात कर ली कि जावा का फीचर ही ये है कि इट इज operating system independent and it is processor independent, so it can work on any device. Oracle Corporation estimate that 3 billion devices are running Java and it is most popular development platform for mobile devices running the Android operating system. Okay. This is although very old figure, it is 2012 uh, research that 3 billion devices today might be many more, might be double of this. The devices might be using the Java programming language. For each of the computing environments in which Java is used, Sun created a Java virtual machine that interprets Java programming code for that machine. In this manner, the code is written once and can be used on any machine for which there exists a Java virtual machine. अच्छा जी, अब Java ने क्या किया? ये इन्होंने क्या किया? जो इनकी टेक्निक थी वो ये थी कि उन्होंने अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोसेसर डेवलप कर दिया विच इज जावा वर्चुअल मशीन ठीक है तो जो भी आप कोड लिख रहे हैं जावा का वो इस जावा जेवीएम विच इज अ वर्चुअल मशीन ठीक है वर्चुअली एक प्रोसेसर क्रिएट हो जाता है जब आप जावा इंस्टॉल करते हैं तो एक वर्चुअल प्रोसेसर आपके पास आ गया दिस प्रोसेसर डज नॉट नीड योर कंप्यूटर प्रोसेसर इसी वजह से हम कह रहे हैं ये प्रोसेसर इंडिपेंडेंट है इसका अपना प्रोसेसर है आप जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस रन करते हैं तो ये जावा वर्चुअल मशीन उसको इंटरप्रेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है Java developers can create a small applet program that can be embedded in web pages and downloaded to run on a web server on a web browser ठीक है तो Java applet programs आप कोई भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आपने कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन देनी है या आपने कोई उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो प्रोसेसिंग करनी है ठीक है you might be asking few questions from the users or visitors and based on that you might be giving them some replies or might be giving analysis of their the information that they have provided that can be done by using these Java applet programs ठीक है छोटे छोटे programs हैं जो कि आप अपने web पेज के अंदर embed कर सकते हैं A web browser is an easy to use software tool with a graphical user interface for displaying web pages and for accessing the web and other internet resources. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox and Google Chrome browser are example. Web browser ठीक है हम सारे यूज कर रहे हैं कि पहले हम
इंटरनेट को एक्सेस किसके थ्रू करना है हमने, तो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं यूजिंग दिस वेब ब्राउजर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर यूजिंग मोजिल्ला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम। ये तीन जो हैं बड़े फेमस जो हैं वो ब्राउजर्स हैं जो कि हम सारे यूज कर रहे होते हैं फॉर accessing the internet and the content available on the internet. Okay, ji. At the enterprise level, Java is being used for more complex e-commerce and e-business applications that require communication with an organization's back-end transaction processing system. ठीक है, तो जो आपकी ई कॉमर्स और ई बिजनेस की एप्लीकेशंस हैं बिजनेसेस के अंदर, वो भी जावा के ऊपर डेवलप की गई हैं। और वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि जावा के थ्रू हम कुछ जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा वेब पेज है, उसके थ्रू वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, और फिर हम जावा के थ्रू उसको प्रोसेस करके उस प्रोग्रामिंग के अंदर उसको जो है प्रोसेस करके और उसके रिजल्ट्स जो है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं टू द यूजर। और ये कम्युनिकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और बैक एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वो सारी जावा के थ्रू हो रही है। Okay, so let's move on to the next software for the web. HTML. HTML is a page description language for specifying how text, graphics, video, and sound are placed on a web page, and for creating dynamic links to other web pages and objects. So HTML stands for Hypertext Markup Language. ठीक है, बेसिकली जो वेब पेजेस हैं उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो आप डिस्प्ले करते हैं यूजिंग दिस HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो आपने HTML पेज डिज़ाइन करना है उस पर टेक्स्ट होगा, उसमें कोई ग्राफिक्स आप रखना चाहते हैं, कोई वीडियो रखना चाहते हैं, किसी किस्म की साउंड आप उस पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई आप उसके ऊपर टेबल बनाना चाहते हैं, कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उस पेज के ऊपर इट इज़ ऑल डिस्प्लेड बाय यूजिंग दिस HTML language. Using these links, a user need only a point at a highlighted keyword or graphic, click on it, and immediately be transported to another link. तो आप इससे क्या करते हैं, आपके एक दूसरे के साथ पेजेस को लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक वेब पेज डिजाइन किया, उसके अंदर आपने उस पेज के अंदर आप डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी आपने दैट कैन बी डन in this HTML. HTML was originally designed to create and link static documents composed largely of text. Today, however, the web is much more social and interactive, and many web pages have multimedia elements which include images, audio, and video. तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें ये वन ऑफ द वीकनेस ऑफ HTML है कि ये जब डिज़ाइन किया गया तो उस वक्त वेब इतना डायनामिक नहीं था। इंटरनेट के ऊपर स्टैटिक पेजेस कि भाई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है और बस ये जिसको हम कहते हैं कि द वेब वाज ओनली रीड ओनली का कॉन्सेप्ट था कि जी इंफॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वेब हैज बिकम रीड एंड राइट, कि आप सिर्फ रीड नहीं करते, आप उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन भी अपलोड करते हैं। तो उसके लिए फिर ये ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया। तो HTML जो है ना वो उसके अंदर फिर इसके अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी कि ये इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव मीडिया के तौर पे डेवलप नहीं किया गया था, स्टैटिक पेजेस के लिए इसको डेवलप किया गया था। Third party plugin applications like Flash, Silverlight, and Java have been required to integrate these rich media with web pages. ठीक है, तो अब चूंकि आपने वो डिजाइन किया था फॉर स्टैटिक पेजेस, तो उसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी प्लगइन एप्लीकेशंस जरूरत पड़े। ठीक है, फॉर एम्बेडिंग मल्टी जो आपको ऑडियो विजुअल कंटेंट उसके अंदर लाना था, तो दैट वाज ईदर यू नो made available on the HTML page by third-party application like Flash, Silverlight, and Java. However, these add-ons require additional programming and put strains on computer processing. This is one reason Apple dropped support for Flash on its mobile devices. ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स जो हैं वो तो आपने यूज़ करके अपना वो काम तो चला लिया, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि आपके कंप्यूटर के ऊपर रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो बर्डन आ गया, और
which require additional programming and put strain on computer processing. तो जिसकी वजह से फिर आपको you wanted to find some better alternative, ठीक है, उसके लिए फिर आपने उस तरफ देखना शुरू कर दिया कि जी what else can be done. So this problem of HTML led to the development of HTML5. ठीक है, HTML5 जो है उसका evolution stage था. This is the next evolution of HTML. HTML5 resolves this problem by making it possible to embed images, audio, video, and other elements directly into a document without processor intensive add-on. ठीक है, तो बजाय इसके कि आप थर्ड पार्टी एड-ऑन्स ऐड करें, ये HTML5 ने अपने अंदर ही HTML5 के अंदर ही इसको ऑफर कर दिया. यानी HTML को जो उसकी आप कह लें डेवलप्ड फॉर्म आई तो उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज दे दी गई कि आप यू कैन upload audiovisual content from within the program rather than using third-party add-ons. HTML5 was also made. HTML5 will also make it easier for web pages to function across different display devices, including mobile devices as well as desktop. And it will support the storage of data offline for apps that run over the web. Web pages will execute more quickly and look like smartphone apps. यहाँ पे HTML के आप एडवांटेजेस डिस्कस किए गए हैं. देख सकते हैं कि जी एडवांटेजेस क्या हुए HTML5 के अब हमारे पास जो है वो मोबाइल डिवाइसेस आ गई. ठीक है, पहले हम डेस्कटॉप पे रिलाई करते थे लेकिन अब जो है मोबाइल डिवाइसेस ज़्यादा पॉपुलर हो गई. तो अब उनकी स्क्रीन साइज का बड़ा डिफरेंस है. डेस्कटॉप की जो स्क्रीन साइज इट वाज अ लार्जर डिस्प्ले, but you can see that the display on your smartphones is quite small. और अगर टैब्स की भी बात करें तो मिडल में आ गया तो दो तीन आपको डिफरेंट जो है ना डिस्प्लेज की जरूरत पड़ गई, डिफरेंट स्क्रीन साइज की जरूरत पड़ गई. तो HTML5 का एडवांटेज ये था कि इट कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द डिवाइस यू आर यूजिंग. ठीक है, इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी रख दी गई कि जब आप इसको वेब पेज को एक्सेस करते हैं फ्रॉम योर डिवाइस तो HTML5 कैन डिटेक्ट कि जी आपने ये जो पेज आप एक्सेस कर रहे हैं क्या डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहे हैं या आप अपने टैब से टैबलेट पीसी से या आप अपने स्मार्टफोन से एक्सेस कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली वो उसके वेब कंटेंट को उसके हिसाब से डिस्प्ले कर देता है. सो दैट इज अ मेजर एडवांटेज. फिर उसके बाद ये आ गया कि जी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि जिसके अंदर आप डाटा फीड करते हैं और वो एप्लीकेशंस ऑफलाइन काम कर रही हैं तो उसमें आपके पास ये भी एक फीचर आ गया कि यू कैन स्टोर डाटा ऑफलाइन फॉर एप्स दैट रन ओवर द वेब. और थर्ड एडवांटेज इसका ये आ गया कि जो आपके वेब पेजेस थे दे विल एग्जीक्यूट मोर क्विकली एंड लुक लाइक स्मार्टफोन एप्स. So these are the three major advantages of HTML5 which were not available in HTML. Although HTML5 is still under development, elements are already being used in a number of internet tools including Apple Safari browser, Google Chrome and recent version of the Firefox web browser. ठीक है, HTML5 के ऊपर डेवलपमेंट में काम हो रहा है लेकिन इसको इट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड. ठीक है, यूज होना शुरू हो गई है. जो आपका एप्पल का सफारी ब्राउजर है दैट इज नाउ यूजिंग HTML5. गूगल क्रोम के अंदर इसको यूज किया जा रहा है और इसी तरीके से जो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर भी आपको ये HTML5 नजर आएगा. Google's Gmail and Google Reader have adopted parts of the HTML standard as well. Websites listed as iPad ready are making extensive use of HTML5, including CNN, the New York Times, and CBS. So, different applications are also using HTML5, जिसमें Google Gmail और Google Reader है. और different जो आपके वेब कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जैसे न्यूज़ एजेंसीज हैं जैसे CNN है, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड CBS है, ये सारे के आपके ये मीडिया एजेंसीज हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं. तो वट एवर कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग ओवर द इंटरनेट दे आर ऑल्सो रिलाइंग ऑन HTML5. ठीक है, तो डायनेमिक कंटेंट वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, कंटेंट जो वक्त के साथ साथ अपडेट हो.
तो उसके लिए फिर HTML5 is the most ideal. So that is a little bit overview of the HTML5. Now let's see what are the few differences between HTML and HTML5. Listed below are some of the main differences between HTML and HTML5. The main differences कौन-कौन से हैं? HTML5 provides better support for different types of media. For example, audio and video. It is done by providing additional tags for media files. By contrast, HTML doesn't support these tags and instead depends on third-party plugins. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जी HTML was dependent on third-party plugins, जबकि HTML5 ने वो सारी capabilities built-in provide कर दी, so you don't need to depend on third-party add-ons. HTML5 enables JavaScript to run in the browser. A feature previously unavailable in HTML. HTML के अंदर ये फीचर नहीं था कि आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के अंदर ही उसको रन कर सकें. This new functionality is called the native support of JavaScript, and it allows for a better web page design and enhanced user experience. तो ये जो नेटिव सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट है वो यूजफुल है इसलिए कि आप इसके ज़रिए से अपने वेब पेज को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने यूज़र्स को आप एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं. HTML5 introduced brand new input attributes including emails, URLs, universal resource locators, date and time, and search to name a few. ठीक है, ये सारे वो चीज़ें थी, ये वो इनपुट एट्रीब्यूट्स थे जो HTML में नहीं थे. यानी आप इसमें ईमेल डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम द ईमेल. आप कोई वेब एड्रेस से डायरेक्ट कोई कंटेंट उठाना चाहें वो उठा सकते हैं. डेट एंड टाइम आप डायरेक्टली इसमें एम्बेड कर सकते हैं और सर्च की जो ऑप्शन है वो भी आप इसके अंदर अपने वेब पेजेस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं. सो these are some of the new attributes which are included in HTML5 which were previously not available in HTML. HTML5 has better browser compatibility than HTML. It is also device independent. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि HTML जो है वो डिफरेंट ब्राउजर्स के अंदर जब आप उसको वेब पेज को लोड करते थे तो उसकी डिस्प्ले जो था ना वो डिफरेंट आता था. यानी सफारी में आपने वो पेज अपलोड किया तो वो डिस्प्ले सम इज लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो ये एक उसके अंदर इशू आता था जो कि HTML5 ने रिजॉल्व कर दिया कि कोई भी आप वेब ब्राउजर यूज करें पेज की जो सेटिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी. और दूसरा इट इज़ ऑल्सो डिवाइस इंडिपेंडेंट. जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे डेस्कटॉप पे एक्सेस करें, चाहे आप उसको मोबाइल अपने स्मार्टफोन पे एक्सेस करें या चाहे आप उसको टैबलेट पे एक्सेस करें, you will get the same appearance and look on all the devices. HTML5 now makes it a lot easier to find locations without the need for third-party plugins. ठीक है, तो एक और उन्होंने उसके अंदर एक फीचर डाल दिया HTML5 के अंदर कि you can easily find location using HTML. You don't need to rely on third-party plugins. Sixth difference between HTML and HTML5 is HTML5 provides native support for vector graphics. This reduces the need for third-party software such as Adobe Flash. ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफिक्स का सपोर्ट था वो इम्प्रूव हो गया. पहले HTML में आपके पास ग्राफिक्स की जो डिस्प्ले था वो आप डायरेक्टली HTML से नहीं कर सकते थे, रादर आपको थर्ड पार्टी जैसे फ्लैश था तो फ्लैश के थ्रू आप अपना कंटेंट जो डिस्प्ले करते थे ऑन द वेब पेजेस. लेकिन अब HTML के अंदर you have this support, you don't need to rely on the third party software. Okay, so that's all about today's lecture. Today we only discussed two topics, two of the contemporary software trends we discussed today. ठीक है, पहले हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की जिसमें हमने लिनक्स को फोकस किया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन जनरल भी बात की और फिर हमने स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक एग्जांपल जो थी उसकी वो लिनक्स था
जिसको हमने डिस्कस किया। और दूसरा हमने सॉफ्टवेयर ट्रेंड जो डिस्कस किया दैट वाज प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर द वेब। उसके अंदर हमने जावा को देखा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, एंड व्हाई इट इज पॉपुलर, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद HTML को देखा कि ये HTML है क्या, और HTML का पर्पस क्या था, और HTML के अंदर क्या वीकनेसेस थी, जिसकी वजह से फिर हमें HTML5 पे आना पड़ा। तो HTML5 का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके फीचर्स हमने डिस्कस किए और उसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। सो दैट इज ऑल व्हाट वी कवर टुडे। सो हियर वी वांट टू एंड आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, अभी रमजान में थोड़ा सा हमारा जो है वो लेक्चर की ड्यूरेशन जो है वो कम हो गई है। rest of the time you can go through this lecture. I'll put it on the LMS. You can go through this lecture and kindly note down your queries. If you have any, you can ask on the LMS, as well as you can ask on the uh, on WhatsApp as well. Okay, so take care of yourself. This Ramadan is a very blessed month, so focus on your fasting। ठीक है जी, रोजे को आप अच्छे तरीके से गुजारें। रोजा सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना हमने छोड़ दिया, बल्कि रोजे के अंदर हमने जो है वो अपनी इबादत का भी एहतमाम करना है, और अपने आप को जिस तरह खाने पीने से हम अपने आप को बचा रहे हैं, इस तरीके से हम दूसरे बुरे कामों से भी बचाने की कोशिश करें, जिसमें गीबत है, झूठ है, एक दूसरे के साथ जो है वो जुल्म ज्यादती है, इन चीज़ों से भी बचने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला हमारे इस महीने को, रमज़ान के महीने को, बाबरकत महीने को अच्छे तरीके से हमें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हमारे ऊपर इस वक्त जो वबा आई हुई है कोरोना वायरस की, अल्लाह ताला इससे हमें भी और पूरे पाकिस्तान की और पूरे आलम इस्लाम के, पूरी इंसानियत को अल्लाह पाक इससे महफूज फरमाए। तो भाई इसके लिए सहरी और अफ्तारी के अंदर जो है ना अपनी खुसूसी दुआओं का भी अहतमाम करें, अपनी नमाजों का अहतमाम करें, कुरान की तिलावत का अहतमाम करें, और दुआओं का अहतमाम करें। और दुआओं के अंदर मुझे भी याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।